Hello friends, this is Syam Kumar and you are watching Nice Spoken English. Good evening to everybody. Let's start the lesson. In our last videos, we had discussed about the narration. Narration means the direct speech and indirect speech. That in our first rule of direct speech and indirect speech, there was the rule that if the reporting verb, remember always that a narration, a sentence has two parts. First one is reporting verb and second one is reported speech. Already I have told in rule first and in rule second, see, if the reporting verb is in past tense, means if these parts will be in past tense, and reported speech means these parts will be in present indefinite, in present continuous and in present perfect, then we change the reported speech in past indefinite, past continuous and past perfect. Suppose if in direct speech, if there will be present indefinite, it will be changed into past indefinite. If there will be present continuous, it will be changed into past continuous, and if there will be present perfect, it will change to past perfect. Here is an example. Ram said, Shyam swims in the river. Means it is clear that this is in past tense and this sentence is in present indefinite. So here, if we do it indirect, Ram said that Shyam swam in the river. This is present indefinite, this is present indefinite, and we have changed it in past indefinite. Present indefinite to past indefinite. Again, let's come. This was the instance or example of present indefinite into past indefinite. Then come present continuous to past continuous. Ram said, Shyam is writing. Shyam is writing. Ram said, Shyam is writing. So, how can we change it? Ram said, already it is also in reporting verb is in past tense and reported speech in present continuous. So, in direct speech, it will be changed into past continuous. Here, in direct, Ram said that Shyam was writing. Ram said that Shyam was writing. This is in present continuous and this is in past continuous. Already it has been written present indefinite, past indefinite, present continuous, past continuous, present perfect, past perfect. So let's come the last one, the example of present perfect. Ram said, Shyam has eaten mango. Shyam has eaten mango. It is in present perfect. So, we'll make it indirect. Ram said that Shyam had, past perfect, had eaten mango. So, see, it is clear that the present perfect will be in past perfect. So, in this way, we should change the direct into indirect. So far as our class is concerned, I have already told you how to change the narration. Remember this one, the first thing to know the direct into indirect changing, first we must have to know the two parts of a sentence, that is reporting verb and reported speech. Remember, only the sentence can be changed into indirect if the reporting verb is in past tense. If the reporting verb will be in future or present tense, the tense of this part will not be changed at all. And if this part will be in past tense,
and this part will be in present indefinite, then it will be changed into past indefinite. If that will be in present continuous, it will be changed into past continuous, and if that will be in present perfect, it will be changed into past perfect. In this way we change the direct into indirect. देखिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना सभी छात्रों को कुछ डिफ़िकल्ट तो लगता है, पर इसका एक रूल है जिसे हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले एक वाक्य का दो पार्ट्स होता है, एक डायरेक्ट वाक्य का दो पार्ट्स होता है। आप इसे देख सकते हैं, ये एक पार्ट्स है और ये एक पार्ट्स है। इसी पार्ट्स को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ये है रिपोर्टिंग वर्ब। और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। सो ध्यान रखिए, यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो ये कब चेंज होता है? जब ये पास्ट में होता है। तो देखिए, यहाँ देखिए, ये पास्ट टेंस में है तो हम इसे यहाँ चेंज कर रहे हैं। पहला रूल में मैंने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी सेंटेंस रहे तो उनको इनडायरेक्ट करते समय उनका टेंस में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाता। रूल सेकंड में मैंने एक्सप्लेन किया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो उसे हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनाइट को पास्ट इंडेफिनाइट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में हम बदल डालेंगे। जैसे ऐसा होता, राम सेड श्याम स्विम्स इन द रिवर। ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो इसे हम राम सेड दैट श्याम स्वम इन द रिवर। इन दिस वे। अब इसे यदि समझ में नहीं आ रहा है, जरा इसे पॉज करके लिख डालिए प्लीज, और देखिए, जरा सा भी आप ध्यान देंगे तो ये जरूर समझ में आएगा। ऐसे ही आप अगर पढ़ते रहेंगे तो एक समय आएगा आप जरूर समझ पाएंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर करिए और कुछ कमेंट बोलिए ताकि मैं इंस्पायर हूँ और फिर कल आपके लिए दूसरे वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन अनदर वीडियो।